हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। और इंडिया के हवाले से जब बात हो तो फिर नाम इंडिया का हो तो फिर बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगी। तो चलते हैं पहले। और कमेंट्स आया था इस वीडियो का, ये भी बता दें। बिल्कुल। क्या नाम था हमारे जो म्यूजिक लवर, उन्होंने ये कमेंट्स भेजा था और बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने सजेस्ट किया, कमेंट्स किया, कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने जा रहे थे, बहुत ही अच्छी और बहुत पसंद आएगी आपको। और तो चलते हैं वीडियो की जानिब। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है The unseen truth of India world need to know। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। What is the first image comes to your mind when you hear the name of India? Like Yes, this or India. this, right? Because your media mostly present such similar images of India in front of you. Okay, let me show you something different than your media. If I say this is India, will you believe me? Maybe not, because most probably you have never seen India in this way. But actually, this is real India which has been hidden from you. The slums, busy and chaotic cities you see on TV or mobile is only a smallest part of India. India is actually pretty normal. And this is the one thing that a lot of people don't understand about India. Okay, let me show you some major cities of India. This is Mumbai. This is Delhi. This is Kolkata. This is Gurgaon. This is Noida. This is Hyderabad. This is Pune. This is Bangalore. This is Chennai. This is Surat. This is Thane. And there are many such modern cities in India. Okay, let's come to the rural part of India, and I'm pretty sure that according to you, the Indian villages are look something like this or this, right? But actually, this is not even 5% part of Indian villages. More than 95% of Indian villages are look something like this. Due to the large population of India, the Indian villages are also so big. Look at this. This is not a city or town, but it's a village called Madhapur, located in the Indian state of Gujarat. After a lot of struggle in 1947, when India got independence from the British Empire, India's economy was only $25 billion. Even in 1991, India's economy was less than the economy of Paris and London. And now India has more economy than the France and the UK. In 2014, India's economy was ranked 10th in the world, but now in 2022, India has become the 5th largest economy in the world with a huge GDP of $3.5 trillion. In just last 8 years, India has overtaken 5 major economies like Canada, Russia, Italy, Brazil, France and the UK, and this is really impressive. India is the fastest growing major economy in the world, and according to IMF, India is set to surpass Germany and Japan to become the world's third largest economy by 2027. India is already the third largest economy in the world in terms of PPP GDP with a huge GDP of $11.7 trillion. And by 2030, India's nominal GDP is expected to be $8.5 trillion, but India's potential is much more than this. After the USA, Russia and China, the Indian military is the fourth most powerful military in the world, and with a budget of $76.6 billion, India has third largest defense budget in the world. Over 1.45 million active personnel, over 1.15 million reserve personnel, and over 2.52 million paramilitary. The Indian military is the largest military in the world with a total 5.13 million military personnel. India is also a nuclear armed country. The country is holds some of the most powerful nuclear weapons in the world, such as intercontinental ballistic missiles, Agni 5, Agni 6, K5 and K6, which has a massive range of 5,000 km to 12,000 km. Even some experts say that India hidden a dangerous weapon called Agni 7 or Surya, which has a massive range of 12,000 km to 16,000 km. There are only 4 countries in the world that have anti-satellite weapons, and India is one of them. India has capability to destroy the communication system of any country in the world by destroying their satellite in this space. The Indian Space Research Organization, ISRO, is among the world's top 5 most successful space agencies. ISRO has successfully launched over 386 foreign satellites
for 36 different countries, including satellite of USA, Germany, France and the UK, and successfully launched over 130 for Indian origin satellites. There are many misconceptions about India have been born in the world, especially in the West, and that's why many people make the mistake of underestimating India. For example, in 2013 when India announced that India will also send its satellite and rover to Mars, the New York Times made fun of India like this. But after in just 1 year in 2014, India became the first country in the world to reach Mars in the first attempt. And just few years later, in 2017, India created an incredible world record by launching 104 satellites from a single rocket, and then India made fun of New York Times like this. This is called sweet revenge. India is among the world's 4 countries that have successfully reached Mars and Moon both. Others are USA, Russia and China. And among the 5 countries that have their own GPS navigation system, others are USA, Russia, China and Japan. After USA and China, India has third highest number of billionaires in the world. As of 2022, India has total 237 billionaires. The Indian stock market is the fastest growing major stock market in the world. Even 2 out of the world's 10 largest stock exchanges are Indian. And India is said to be world's the largest stock market by 2030 with a total expected market cap of over $11 trillion. The world's fastest growing startup ecosystem. In 2014, India had only 400 startups, and as of 2022, India has over 77,000 startups, which makes India globally the third largest startup ecosystem in the world after USA and China. As well as India has third highest number of unicorns in the world. The country is home to the 108 unicorns with a total valuation of $341 billion. India is already among the top 5 most industrialized countries with a total output of $900 billion, and it is said to be third most industrialized country by 2030 with an expected industrial output of more than $3 trillion. Currently, India is the 8th largest exporter in the world. Total export of India was $675 billion in 2021. And the country is on the way to become the third largest exporter in the world by 2030 with an expected export of more than $2 trillion. India is emerging as factory of the world due to its large skilled workforce. Even in 2021, India overtaken USA and became the second most attractive manufacturing destination globally, second only to China. Production. India is the largest producer of tractor, two-wheeler, spice, dairy products, milk, ginger, turmeric and sugar. Second largest producer of smartphone, steel, cement, vegetable, fruit, rice, wheat and cotton. Third largest producer of electricity, renewable energy, gems and jewelry. Fourth largest producer of cars and trucks. The Indian textile industry is the second largest textile industry in the world with a total valuation of over $225 billion. The country is well known as hub of information technology. The annual revenue of Indian IT industry is more than $200 billion, and it is said to be $350 to $400 billion by 2025 and more than $1 trillion by 2030. Also known as the pharmacy of the world, the country's massive pharmaceutical industry is the source of more than 50% of global demand for various vaccines. India is the largest provider of generic drugs globally. Over 40% generic drugs in the USA and over 25% of all medicine in the UK are supplied by India. It is difficult to imagine how the world would be able to combat AIDS without India, because globally over 80% of antiretroviral drugs which is using to combat AIDS are supplied by India. Known as the potential superpower, India is the second most populous country in the world and its potential is unlimited. The country has largest young force in the world, more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% of its population below the age of 35. And this young power is helping India to become an economic superpower like USA, China and European Union. But still, if you think that India is a poor country, then let me tell you that Indian households own the largest amount of gold, 25,000 tons to 30,000 tons, which is worth over $1.5 trillion to $2 trillion, and it is more than the economy of Australia, South Korea and Italy. Even Indian temple alone have 4,000 to 5,000 tons of gold,
which is worth more than $300 billion and is more than the economy of New Zealand and Finland. Indians are just love golds and jewelry, and that's why India is the biggest consumer of gold, silver, jewelry and gems. Many people in the world, mostly in the West, use HDI and per capita to criticize India, but they forget that India is the fastest growing major economy in the world. Currently, India's HDI is considered in the medium category, which is expected to move to the high human development category by 2025. Even today, 14 Indian states are comes in the high human development category and 13 Indian states are very close to achieve this. And many Indian states have more GDP per capita than the per capita of many European countries. Well, India is 7 to 10 times cheaper than the Europe and America. India is just like China. As China developed itself in the past, today India is developing in the same way. According to recent UN study, the country has lifted more than 415 million people out of poverty since 2005, and according to World Bank, poverty in India has reduced by 12.3% between 2011 to 2019 from 22.5% in 2011 to only 10% in 2019. And according to recent study of IMF, India has almost wiped out extreme poverty. The percentage of people living in the extreme poverty in India is only 0.8% now. The country is home to the rich culture and spirituality. No country in the world as diverse as India. There are 28 states and 8 union territories in India, and they all have their own culture, music, languages, races and food. And no country in the world is more colorful than India. Even India has entire colorful cities like Jaipur, the city of pink, Udaipur, the city of white, Jodhpur, the city of blue, Jaisalmer, the city of gold, and Kanyakumari, the city of 7 colors. India is whole world itself. India has snow like Greenland, beauty like Switzerland, desert like Arab, wildlife like Africa, beautiful cities like Europe, forest like Brazil, and mountains like Japan. Even India has a white desert also. 100,000 of beautiful temples, historical monuments, incredible architecture sites, extremely beautiful hill stations like Manali, Nainital, Simla and Spiti Valley. India is just incredible. India is transforming itself as global economic powerhouse. The country is home to the highest number of under construction mega projects in the world. Project Bharatmala cost $140 billion. Project Sagarmala cost $130 billion. Project DMIC cost $100 billion. Projects 100 Smart City cost $100 billion. These are few big projects out of them. As well as the country is spending a massive amount of $1.5 trillion to modernize and develop its infrastructure. Along with this, seeing the growth of country's urbanization, India is also creating many new and futuristic cities like Gift City, Dholera SIR and Amravati Smart City. The fastest growing major economy, the fastest growing major stock market, the fastest growing startup ecosystem, healthcare. हाँ सिमल, किस चीज़ की तारीफ करेंगे? हर चीज़ की माना 100% जो है ना नंबर 1 पर आ रहेंगे ना। आउटस्टैंडिंग वो देखा आपने 5th नंबर पे से फिर वो 3rd नंबर पर यानी कि 2014 के बाद से जो है इन्होंने जो ग्रोथ इनकी रेट आया है वो तो 2023 में जो है ना सबको ही पीछे छोड़ दिया, फ्रांस और यूके तक को भी जो है ना पीछे छोड़ दिया। तो ये 2030 में जो है नंबर 1 पर होंगे। तो जिस तरीके से इनका ग्रोथ रेट जा रहा है और आप ये देखें कि मेहनत लगन और जिस कंट्री में नौजवान होंगे ना, कंट्री कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, उसकी भागदौड़ नौजवानों के हाथ में अगर होगी तो वो नौजवान ही अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। तो आप ये देखें कि जितने भी नौजवान हैं इंडिया के, उन लोगों के उनके जहनों में एक ही बात है कि बस हमने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, कोई कारोबार में लगा हुआ है, कोई जो है ना अपने जो है कोर्सेज करने में लगा हुआ है, आईटी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और गाड़ियाँ बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये भी नहीं है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो उन्होंने ग्रोथ रेट जो है बढ़ाया, कम नहीं करा। और एक बच्चा आता है तो वो अपने पूरे गांव को लेके आ जाता है, यानी कि एक विलेज से जो दूसरा बच्चा भी आ गया, तीसरा भी एक दूसरे को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, कोई जेलिसी नहीं, कुछ नहीं, एक
आगे से आगे मैं काफ़ी दिनों से जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि ये हर चीज़ में नंबर 1 चाहते हैं, नंबर 1 आना चाहते हैं कि भाई हम खूब से खूब तरह की चीज़ और मेहनत करते हैं, मेहनत करके अभी देखिए तीसरे पोजीशन पे आ गए ना। हाँ, तीसरे नंबर पे आ गए, पहले नंबर पे भी आने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब एक स्पीड इतनी तेज चलेगी और वो अपनी सिम्फ में चलते रहेंगे और अपनी मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों के माइंड में ये बात आ जाए ना कि भाई गलत चीज़ों को बाहर निकाल के फेंको, सही चीज़ों को आगे लेके जाओ, तो जो कौमें सही रास्ते पे चलती हैं वही कौमें जो है कामयाब तरक्की करती हैं। तो अब अगर जो लोग जो है गलत रास्ते पे चलते हैं शॉर्टकट पे, यानी कि मेरा मतलब है शॉर्टकट पे कि भाई हम जो है ऐसे कर लेंगे तो हमें इतना फ़ायदा होगा, सामने वाले का नुकसान कर दें, तो जब सामने वाले का हम लोग नुकसान कर रहे होते हैं तो हमारा कभी भी फ़ायदा नहीं हो सकता। नहीं होता। फ़ायदा जब भी होगा जब हम सामने वाले का फ़ायदा सोचेंगे तो जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये मैं ये देख रहा हूँ कि इन लोगों में ये है कि कहीं भी जाते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं, पीसफुल होके रहते हैं, अच्छा वहाँ पर इनका नाम होता है कि भाई काम अच्छा करते हैं, ये टाइम टू टाइम चलते हैं, ये जो है पंचुअल हैं ये। और अब अदर कंट्रीज में पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियन को प्रीफर करते हैं, इवन नहीं कि बांग्लादेश को भी ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। उसकी एक वजह ये भी कि भाई लोग लो कॉस्ट में भी काम कर लेते हैं और कोई गुरूर नहीं है, कोई वो नहीं है और दब के जो काम कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा एक एज फैक्टर है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपनी कल्चर को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपनी चीज़ों को भी जो है ना हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये इन चीज़ का बड़ा फुकदान है कि भाई अगर यहाँ पर कोई बंदा कर भी रहा होता है तो और बंदा कोई कहे ना, जैसे सिमन मेरे पास कोई काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं कि यार मैंने एक बंदे को कहा यार मुझे जो है आप लंदन में रहते हैं तो थोड़ा मुझे जो है ना इन्विटेशन भेज दो, ये वो करो, तो कहना यार वहाँ क्या करोगे, वहाँ तो ये ना उसके फादर ने कहा जैसे आप मेरे बेटे ये वैसे ही मेरा बेटा है, आप इससे मीटिंग करो और इसको बुलाओ। तो उसने कहा यार आप कब फारिग होते हो? मैंने कहा मैं रात को 2 बजे फारिग होता हूँ काम से। कहता है मैं आपको 2 बजे मिल रहा हूँ। रात को 2 बजे वो मुझे अपने वालिद साहब के कहने पे आगे मिलने के लिए मिला, मुझसे बात की थी, कहना है और क्या हो रहा है? मैंने कहा बस यार इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने ऐसी एक हवाले दे दिया, मैंने कहा मेरे एक दोस्त है वो साउथ अफ्रीका में रहता है, बोले यार साउथ अफ्रीका जैसी कोई जगह नहीं है, आप साउथ अफ्रीका क्यों नहीं जा रहे? यानी कि उसके फादर ने कहा था इसको जो है बुलाओ, उसने वो वाला चक्कर काट के मेरे को साउथ अफ्रीका वाले चक्कर पे डाल दी कि भाई आप साउथ अफ्रीका चले जाओ। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये चाह नहीं रहा कि ये मुझे सपोर्ट करे या मुझे देखे। तो यहाँ हमारे यहाँ इस बात का बड़ा फुकदान है कि अगर एक दूसरे को सपोर्ट कोई नहीं करते, चाह रहा है कि भाई इस तरह हो तो दूसरे को सपोर्ट करते, काट देते हैं, एक को दूसरे से काट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है कि जिसकी वजह से हम लोग जो है पीछे हैं और मस्बत सोच रख के जो है लोग आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी इंडिया की, तो इंडिया के हवाले से अगर आप देखो नोएडा, मनाली और जो है इंडिया, मुंबई, दिल्ली, ठीक है ना, और गिफ्ट सिटी और तमाम चीज़ें ना एक अलग ही, हर शहर ने एक अलग जो है ना अपनी जो है ना परफॉर्मेंस दी है। इवन ये कि गुजरात अब पहले कैसा था, गुजरात अब कैसा आएगा, तो जीडीपी रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा के जो इन्होंने दिया और आज इंडिया जो है बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो हम जितनी भी तारीफ करें कम है और जिन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी थी उनका बहुत शुक्रिया। और सिमल का एक मैसेज है, बिल्कुल वही हमेशा की तरह के जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मुझे डॉक्टर साहब को दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।